मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत। हमले के बीच यूएई से सुरक्षित निकला तेल का जहाज जग लाड़की। The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 80,000, about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. कच्चे तेल की बड़ी खेप आ रही भारत। तो दुनिया में एक बार फिर से भारतीय कूटनीति की ताकत देख रहा है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए होर्मुज का ओपन रहना काफी महत्वपूर्ण है, पर जंग के हालात में ये गलियारा भी प्रभावित हुआ है। होर्मुज पर संकट आते ही भारत एक्टिव हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ ही अरब देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत शुरू कर भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद ऐसे कठिन समय में भी होर्मुज के द्वार भारत के लिए खुलने लगे हैं। शिवालिक और नंदा देवी के बाद अब एक और शिप कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। इंडियन नेवी इसे एस्कॉर्ट कर रही है ताकि इसकी किसी भी तरह के खतरे के समय से पहले विफल चाहे किया जा सके। दरअसल वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय ध्वज वाले जहाज जग लाड़की ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तेल टर्मिनल पर हुए हमले के बाद सुरक्षित रूप से रवाना होकर भारत की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है जहां पर जंग का माहौल था। जंग के माहौल के बीच में भी आपको बता दें कि जब फुजैरा तेल टर्मिनल पर हमला हुआ उसके बाद भी इस हमले के बावजूद वहां से सुरक्षित रूप से भारत के लिए जो है ये रवाना हो गया और इसने अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार 14 मार्च 2026 को जब भारतीय जहाज जग लाड़की फुजैरा सिंगल पॉइंट मूरिंग पर कच्चा तेल लोड कर रहा था, उसी दौरान फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ। इसके बावजूद जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित रहे। जहाज रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार फुजैरा से सुरक्षित रूप से रवाना हो गया। जहाज पर करीब 80,800 मीट्रिक टन मुर्बन कच्चा तेल लदा हुआ है और ये भारत की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में तैनात भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और समन्वय किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समुद्री दुर्घटना या सुरक्षा घटना की जो है अगर आप कहेंगे कि सूचना नहीं मिली। बता दें कि इस बीच 2 अन्य भारतीय ध्वज वाले एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक और नंदा देवी भी सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों जहाज पर कुल मिलाकर करीब 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है। The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 80,000, about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. Since the activation of DG Shipping Control Room, the Directorate has in the past 48 hours, I am giving figure for the last 48 hours, about 310 calls and about 600 emails have been received, and in the last 24 hours, just a breakup of this number, in the last 24 hours the number has been 53 calls and about 150 emails. The DG Shipping, as regulator of maritime sector of India, has facilitated safe repatriation of 286 Indian seafarers from the Gulf region so far, and this includes 33 sea repatriations in the last 48 hours, and in the past 24 hours the number has been 10 repatriations from various airports
and regional locations across the Gulf region. Major ports of India are closely monitoring vessel movement and cargo operations in view of evolving maritime situation and providing all possible support. Some of the measures, the relief measures through policy and through initiatives of the ports, I have already narrated in the earlier briefings. One example I'll cite today. They are maintaining close coordination with the customs and other stakeholders to facilitate resolution of operational issues. For example, the Jawaharlal Nehru Port is providing temporary storage of laden containers destined for Middle East as transshipment containers. And that port has also provided 100% rebate on ground rent or dwell time charges and about 80% rebate on reefer container plug-in charges up to 15 days for containers originating from GNPA. Approximately 2,600 containers have been shipped to the Middle East during the last 5 days from this port. Today also I had a review with all the ports, all major ports, and some of the stakeholders, including the EXIM association groups. And what I learned from that, there is no congestion has been reported at any major port. And export-bound containers at GNPA have reduced from 5,600 to 3,900, which I stated earlier. The ports are also providing safe anchorage areas for loaded vessels bound for the Gulf that are currently unable to transit due to the prevailing situation. And also an interministerial group has been constituted under the Directorate General of Shipping with members from customs, ports and other stakeholders. And the ministry continues to closely monitor the evolving maritime situation in coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions abroad, shipping companies and other maritime stakeholders. This is in order to ensure the safety and welfare of Indian seafarers while maintaining continuity of maritime trade and port operations. Thank you. मंत्रालय के अनुसार शिवालिक जहाज 16 मार्च यानी सोमवार को आज गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी कल यानी 17 मार्च को बुधवार को कंडाला बंदरगाह पहुंचने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज, जिन पर कुल 6 से 11 भारतीय नाविक तैनात है, फारस की खाड़ी क्षेत्र के पश्चिम में मौजूद है। इन जहाज़ों की गतिविधियों और सुरक्षा की निगरानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग डीजी शिपिंग द्वारा लगातार की जा रही है। यह निगरानी जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय के साथ की जा रही है। डाल ने बताया कि समुद्री हालात को लेकर नाविकों और उनके परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कंट्रोल रूम की स्थापना के बाद से अब तक 2995 फोन कॉल, 5357 से अधिक ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिनमें जानकारी से जुड़ी मांगे शामिल है। सुरक्षा में कोताही नहीं है। सरकार के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी भी लगातार सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 276 भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है, जिनमें 23 नाविकों की वापसी पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों और क्षेत्रीय स्थानों से कराई गई। उधर भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, देश भर के बंदरगाह मौजूदा समुद्री स्थिति को देखते हुए जहाजों की आवाजाही, कार्गो संचालन पर करीबी नजर रखे हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया, वो विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन, शिपिंग कंपनी और अन्य समुद्री हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं, ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्री व्यापार और बंदरगाह संचालन की निरंतरता जो है बनी रहे। इस बीच अब आपको बता दें कि एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ईरान को इस वक्त जो आपको बता दें कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम लीडर, जो ईरान का सुप्रीम लीडर को जो भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बता दें कि अब्दुल मजीद हाकिम अलाही का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि भारत को सेफ पैसेज देने की बात कही है। साथ ही साथ भारत और ईरान के रिश्ते पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। Help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. So we are going to see like a free passage for India from Of course, yes. Can you elaborate on that, sir? Yeah. I heard that our embassy tried to provide opportunity for some Indian ships to cross the Strait of Hormuz.
So, sir, now Trump is saying that Iran want to negotiate, but we are not going to do, and we are going to continue attack. So, what will be the off ramp? Like, how it's going to de-escalate? Because, sir, it's not just the oil prices which are going up. It's everything. It's affecting each and everything. Its inflation is going up. So, it can be a crisis not only for Iran and America or Israel, for the global community, sir. Actually, the crisis is not only for Iran, but it's a global crisis. And they impose this war to us, and we have to defend ourselves. And we are ready to share our blood for our dignity, for our independence, for our country, and we are not ready to submit ourselves to our enemies. So we stand up to end of this war, and if the global country and issues, and also the leaders of the world, they want to stop this war, they have to come and they put their voice together and try to stop it. Because a lot of people, whether within Iran and out of Iran, are suffering from this conflict. do you think that it is going to ease down the situation as far as India, Iran, and the corridor of energy is concerned? As you know, the relationship between Iran and I can say preferential between Iran and India rooted to more than 5,000 years. Iranian connected to Indians through cultural, through civilization, through philosophy and spirituality. And you know, the late our supreme leader, Ayatollah Uzma Sayyid Ali Khamenei, the first book he wrote about India. And it's in 2 volumes. We have it here. This means that he loves and he loved India. And several times he was insisting on the good collaboration and cooperation between Iran and India. Even his son also, because whenever I was going back to Iran, I was meeting him. And he was insisting on good collaboration with India, and he was praising on Indians. He was saying they are very loyal, they are very honest, they are very kind, they are very smart, they are very good people. So never we want to have any kind of problems in our relationship and friendship. And I'm sure that there is no any conflict and any problem in our relationship. Started from long time ago, and it will continue. But under these circumstances, as these conditions, and on the attack against Iran, Iran wanted to defend themselves, so some countries also suffer by this problem, and it could be solved by negotiating. Sir, in the end, the new supreme leader is now appointed. And what is your take on him, and tell us something about him which you want to share? Yes, I had privilege to have very close friendship with him for several years. He is from his personal life. He's very, we call it Zahid, is very pure. Never he uses anything from the government. I remember several times for his course of his life, he was borrowing money from his friends. He doesn't have a house. He lives in a rented house up to now. And also he doesn't have car. And also he doesn't have bank account. I said several times, I saw he was borrowing money for buying. वैसे आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से जंग के माहौल और हमले के बीच अब भारत का एक और तेल का टैंकर जो है वो सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।